document from which all laws of India derives its force. Then there are the legislators who make those laws, which are sitting in your parliaments and your assemblies, right? Then there's your judiciary. उनका काम क्या है? To interpret that law. A law was made, then you take out different meanings from it, interpret each and every word from it. And then there's an executive जो आपका basic काम करता है. Now, the constitution says everybody is equal and there should be no discrimination. And at least the state should not discriminate between anybody. It also states that if a state discriminates, then your fundamental right is violated and you can approach the High Court or the Supreme Court for the same. Right? But why is it so that the Constitution itself, in Article 15, Clause 3 states that the state can make special provisions for women and children? एक तरफ हम कह रहे हैं डिस्क्रिमिनेट मत करो, सब बराबर है. एक तरफ हम कह रहे हैं विमेन एंड चिल्ड्रन के लिए डिस्क्रिमिनेट कर दो, कोई बात नहीं. So why is it so? So to understand this, we cannot study the law in isolation. Lawmakers make laws from where? They see a problem, as we discussed last time, in the society. They try to undo the situation. So we have to see and interpret and read law in consonance with the society. So because the society in India and the customs and the rules in India are not equal for women, that is why the state says, the constitution says that the state can make some beneficial legislations for women and children. What are beneficial legislations? Special legislations which are made for the benefit of a class or a caste or a section of the society, right? So, and because women and children are the most vulnerable section of the society, therefore some laws were made to undo the mischief around that, the inequality that they are, living in. So, and now, but there is one thing. Yes, please. Sometimes females take undue advantage of the benefits that they get. Sonia, ma'am, right? Yes, ma'am. Ma'am, I'll address that in due course. Fine, ma'am. Does that work? Okay. So we can keep the questions in the end. You people can note them down. And if anything is not addressed, we'll take care. Okay? Okay. So, so what happens is there are some beneficial legislations made for women and children. I said children. I didn't say female children. So we'll note that later, right? Some of such laws, right? First is the Hindu Succession Act. Before 1956, the property used to go to the son. The entire property of Hindu parents would go to the son. So this problem, people saw and people said, no, something needs to be done around it. If we are having daughters, we should work around that situation. So before this act, parents क्या करते थे? सीधा, you understand Hindu undivided family? All of you, right? So Hindu undivided family में there is a Karta who is the head, and then there are members who are co-parceners, right? So earlier only a son could be a co-parcener. By birth, if you were born as a son in the family, you would become a co-parcener or a member who would inherit, right? After 1956, they said कि नहीं, daughters को भी मिलना चाहिए. So then slowly and steadily, daughters को co-parcenary rights मिलने शुरू हुए. Then ये तो हो गया co-parcenaries में. What if my father or my mother have made properties from their own effort, their individual properties? उसमें sons और daughters का rights होने शुरू हो गए. तो slowly and slowly, then development और detail में हुई कि co-partners में daughters को right आया. फिर आया कि backdate से law बनने से पहले से आएगा नहीं आएगा. So slowly and slowly, daughters के rights improve होने शुरू हो गए. So that was the evolution part of this law. Although I strongly believe this law is still not evolved enough. I think we discussed on the last date that you take as a daughter, but you don't give as a daughter. How? If I have made a property, my property's right is my family, which is my husband's family first. Then it goes to my parents, legally. So there is this needs evolution. Why? Because obviously, every law is a law in the making. As the society will change, slowly and steadily, the laws will keep on evolving. And this case is actually pending before the Supreme Court. Maybe we'll find something good around it happening very soon.
Then another law, I think सबसे ज़्यादा, and this act I'll discuss in detail in the next lecture, which is the Domestic Violence Act. I can see a lot of you have questions around this, right? So Domestic Violence Act, why is it important? It is important because where are we our most vulnerable selves? We don't keep a protective wall. Normally when women go on the road, we have 4 eyes, actually 8 in all directions, right? But in our home, we are vulnerable, relaxed, walls down. So if something happens to us in the family, that needs to be addressed on the first instance, right? And now there's another reason to it. What comes to your mind when I say domestic violence? If I can encapsulate, it is a wife being beaten by the husband. I don't think you imagine a daughter or a mother or a sister or some other relative being violated, right? But the law thinks widely about it. Law says any woman, any female relative. Okay? When law says violence, law doesn't only count your physical violence, it counts mental violence, it counts sexual abuse, it counts emotional abuse, it counts monetary abuse, economic abuse, where women, like someone said, I think Kamya or somebody said that I saw a corporate employee and she talked about, how she didn't know about her rights, and she talked about even about financial education and financial stability. So economic abuse is also covered because, you don't only hit a woman on the face, you hit her at a lot of places. You hold a woman's child captive, the woman will not exit the relationship at any cost. So Domestic Violence Act was covered, and this act has been also been evolving. Initially, when the act came into force, the legislature said that victim can be woman and aggressor or perpetrator can be man. Slowly, the judiciary realized that this is not the case. Does a mother-in-law not abuse the daughter-in-law? Does a sister-in-law does not abuse? So it's very convenient. The husband will not say anything. The mother-in-law will abuse and they'll go scot-free because they'll say, oh, we are protected by the law. We are women. So slowly, any man was deleted and the insertion became a person or a family member or things like that. So now, victim can be a woman, but perpetrator can be any gender. Right? And earlier it was adult. Perpetrator could only be an adult. Now adult is also deleted. So this law has been going through a lot of evolution. Although some things are not happening for the good also. Just say, for example, earlier a woman could just say, I think Sonia ma'am had that question. A woman could simply say, this happened to me. And this is what I brought from my mother's place, and this is my expense, which used to be this much, and this is my income. So slowly and steadily, Supreme Court says this does not work. And the husband would do the opposite. Because the trick for the husband is make her starve, she'll cave in. Right? So the husband used to say, oh, I have poor parents, I have old parents, I have so many loans. He used to transfer entire property to the parents, right? So slowly and steadily, court said, no. File an affidavit stating your incomes and your asset and your liabilities. Both parties would do that. So how much can you do? People lie, they still lie. But how much can you lie in writing, on oath? So that is another part of evolution, right? Now, we are our most vulnerable selves at home, but where do we spend most of our time? On the road? No. At our home? No. In our workplaces, right? So in relation to our workplaces, there was sexual harassment. It is a known fact. I don't need to, I think, go into detail of that. There was sexual harassment happening to female employees and they could not report it. They would face it. Our sports persons are still protesting around it, right? So there was a POSH Act, or a Protection of Women from Sexual Harassment at Workplace Act, that was enacted. And in that, a workplace was defined. Example,
This act applies in context to a workplace to every woman and not just employees. So if you're a client, if you're a visitor, even then you are protected if you are harassed under in that workplace, right? And in context to a home or a dwelling place, it covers your maids, your house helps. So if they are violated at your home, it is their workplace, right? So if something happens to them, then they'll be covered under the POSH Act. But what exactly can they do around it? If they come to your house and they are violated in your house, you are for sure not going to help them out in that scenario. So there are two things. Every organization with more than 10 employees has to have an internal complaints committee. It has to have, and there are penalties for not having it. Although, are the structures in place? We are skeptical about it still. Because I have even seen women lawyers getting harassed in places where they work, leave alone laypersons, right? And because the reporting boss was the harasser, so you know what the consequences would be. But still, on paper, every organization has to have an internal complaints committee. Now, if you face something, then you go in writing to the internal complaints committee and they follow a procedure and help you around with it. Now, is it applicable only to workplaces? What about schools? What about hospitals? So we said what about NGOs? NGOs are not technically workplace of a lot of people because they don't charge any remuneration from them. But no, I said every organization. So everything is covered. And then how do you educate people around it? So all of you who are working or studying can go and check whether your school, college or organization, they have to widely publicize. And they have to put placards or hoardings that so-and-so is the member, this is our internal complaint committee. So even say in a school, if a student is harassed, they have the right to go, not only teachers. राइट बिकॉज हमारे दिमाग में क्या आता है टीचर्स कर जा सकते हैं नहीं स्टूडेंट्स भी जा सकते हैं ठीक है अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन छोटी है इफ यू आर वर्किंग फॉर से अ प्लेस विद लेस देन 10 employees so every district has a complaints committee which is the local complaints committee so wherever you are staying you can check on Google or whatever that where your district complaints committee is and I think all of you should know it because if not you can help somebody out. If that also does not help, so all these offenses of harassment are penal offenses, as in you can always go to the police around it. So your organization cannot tell you that you can't go to the police. If they don't help you out, you have the complete right to go to the police. Because normally what organizations do is they hold you captive. जाओगे तो हम ये कर देंगे या तो हमारे पास ना आते. So once your internal complaints committee they find evidences, they ask your co-workers or whatever, they make a report and if they find something, they also have the duty to report to the police and help you out with it. And if they are not helping, you go yourself. That can be done. You also have the right that if, say, the person who's the perpetrator is a reporting boss or somebody who is in authority, that person cannot be say the in charge of the committee or have any pressure or force which normally does because जो committee में होते हैं उनका boss तो वही है जिसने तंग किया है right so that you can do that person can be transferred for the time being that person can be suspended for the time being ये सब on paper है that is why you should first check कि आपकी company कितना follow कर रही है and if not so taking steps would always help you in future right तो ये आपका हो गया at workplace. Now, have you ever tried going to the police for anything? Normally, what they'll tell you is कि मैडम यहाँ की jurisdiction नहीं बन रही. आपका तो वो वाला पुलिस स्टेशन पड़ेगा. वहां जाओगे वो कहेगा नहीं मैडम आप तो गलत आ गए. आपका तो वहीं जाना था. So, two things you need to know. A, when you report a crime, jurisdiction उस हर जगह बनती है जहां वो क्राइम या तो हुआ है या कंटिन्यू हो रहा है. नंबर 1.
And number two, being women, you can file 0 FIRs. You can go to a police station and say, you file my complaint, you write down my complaint. You can't give me a number. Every FIR or complaint has a DD number, right? A number, a stamp that they'll give you, which they'll enter. So if you can't, fine, write a 0 FIR, which means this complaint will have 0 number of so and so year. And you do the needful of sending this complaint to the correct jurisdiction. Don't make me run around. So you can do that. And I'm talking of the Indian Penal Code, which will now from July be changed to the new laws. In new laws, they've detailed 0 FIR also. They've actually formally mentioned it now. जो अभी तक Aditi, for women, 0 FIRs चलती हैं, even for your harassment crimes. You can tell courts. Somebody wrote it's for heinous, right? Women होते हुए आप obviously आप अपने पर्स चोरी होने की FIR लेके तो जा भी नहीं रहे हो ना पुलिस के पास. You'll always go and say somebody harassed me, somebody molested me, somebody did something to me, right? So they can't make you run around. ये आपके साथ होगा. That is why. Then पुलिस से रिलेशन में कुछ और चीजें कवर कर लेते हैं फटाफट, ठीक है? पहला, a woman cannot be arrested after sunset and before sunrise. After 6 p.m. before 6 a.m. Police cannot take you to the police station. If they have to take prior permission from the magistrate. Which means कि आपको वो पुलिस स्टेशन में रात को ले जाके molest नहीं कर सकते, which is the reason why this protection is being given to women, right? Then for women, एक minute, I have. हाँ, दूसरा पुलिस आपको, ये तो आई थिंक हम सबको पता है कि विमेन पुलिस ऑफिसर्स के बिना नहीं ले जा सकती, राइट? विमेन पुलिस ऑफिसर्स के बिना आप अरेस्ट नहीं हो सकते. शाम को 6 बजे के बाद सुबह 6 बजे से पहले आप अरेस्ट नहीं हो सकते. सिविल मैटर्स में जैसे रिकवरी के लिए या किसी सिविल डिटेंशन के लिए, क्रिमिनल मैटर्स में नहीं, उन केसेस में विमेन को जेल नहीं ले जाया जाएगा. विमेन से पूछताछ करनी है तो आप उनको पूछताछ के लिए नहीं बुलाओगे, आप उनके यहाँ जाओगे ऑफ अ प्लेस वेयर दे आर कंफर्टेबल विथ. सो दीज आर अ फ्यू थिंग्स which I think everybody should know, irrespective, because पुलिस से ज्यादा harass being a lawyer मैं बता रही हूँ कोई नहीं करता, right? One more thing, there are crime against women cells which are part of your local police departments only, like from Delhi police has a crime against women cell, same goes for Haryana, and some states in the south call them differently, but almost every police has a women cell. The names may differ state to state. तो अगर आपके कुछ issues हैं, especially matrimonial issues जब आपके आते हैं, be it your dowry harassments and your dowry demands and all, in that situations you can straight away go to the crime against women cells where ज़्यादा female होती हैं and they are softer towards women. Now again, but be careful in that also because at the end they are police people. Police personals, and at the end they have become immune to emotions, but then there are better places to go. So for example, if you are a woman and you go with a crime against women cell and say you are married, right? So वो आपको सबसे पहले mediation में डालेंगे and they'll try to resolve. If that does not work, then they'll file an FIR, right? अच्छा, FIR कराने का anybody has tried? Just raise your hands if you have. छोटी से छोटी किसी भी चीज में. Sonia ma'am has, okay. Priya has, okay, great. So जाते ही हो गई थी. मुश्किल है ना? सबसे पहले some things. हो गई थी मैम, हो गई थी because I went for my minor daughter actually. हाँ, so that is an exception that if they'll not do, they'll face consequences, right? Yes. Yes. So normally when you go to a police station, अच्छा इसमें कुछ women बता रही हैं, this is a general thing everybody should know, right? When you go to a police station, they don't straight away write an FIR. They'll write a complaint. And Delhi में, whoever is living in Delhi,
Delhi may they'll very easily take the complaint from you, give you a receiving. But from some states, I've realized UP, Haryana, I've faced places where they keep on telling you, we are not receiving it, we are not receiving it. So what you do is you normally take it in writing, because oral में क्या होता है, you give them the discretion to write whatever they want to. So you take your complaint in writing, if possible, get it drafted properly with the sections and everything, so that उनका discretion कम से कम होता चला जाए, right? Then you take it in duplicate and take a receiving on the duplicate. They'll give you a DD number or a daily diary number, wherein they'll write the number on the year where they've registered and the date. Now, if after some time they think that an FIR should be registered, they'll do so. If not, then you escalate the matter to the superintendent through writing and through post. You speed post it to the senior, as in the superintendent of police. If even that does not work, then you have the right to go to the magistrate. You file a 156(3), right? That's a CRPC section. Non-lawyers can just ignore this part, right? You go to the magistrate and you say, the police is not helping me out. This is the matter. Please instruct them to register the FIR. Now it will become the discretion of the magistrate whether he wants the police to register it or he wants to take the case forward himself. ठीक है? So this is something you can do. तो आप endlessly 8-9 महीने people wait. I've seen people tell me, नहीं मैम पुलिस वालों ने ना मुझे बोला है 15 दिन बाद आना. So उसको 15 दिन करते करते कभी कभी साल निकल जाते हैं and people are just hesitant to report. So you can do that. Now एक चीज पे बात करते हैं, चलो लिव इन रिलेशनशिप्स पे थोड़ी बात कर लें. यंग स्टूडेंट, यस, ओके ग्रेट. सो इंडिया में लिव इन रिलेशनशिप के लिए कोई फॉर्मल लॉ नहीं है. वी डोंट हैव अ लॉ. कोई ऐसा एक्ट नहीं है, लिव इन रिलेशनशिप एक्ट सो एंड सो, राइट? बट द सुप्रीम कोर्ट हैज टेकन इट वेरी सीरियसली. Over a period of time, the courts have realized that the society is evolving and we need to too. Because what is actually the difference between a marriage and a live-in relationships? There are two differences. A, formal ceremonies, right? And B, societal acceptance. There is no third difference if you ask me technically, right? So what problem this was creating was, why people choose relationships? Easy entry, easy exit. B, there is no third party intervention. Because when a relationship get into marriage, there's a mother-in-law, there's a father-in-law, there are two families, relatives, right? So live-in relationships are evolving and we have to understand that. So we can't be closing our eyes and ears around it. So what was the problem that was happening? There were majorly two problems. One was, what happens to the children of those relationships? Because our society is actually very conveniently labels children as illegitimate and calls them name I would not like to repeat, right? And secondly, what happens to partners in that relationship if something happens to them? If a wife say goes, if marital rape happens on a wife, ठीक है, होता है, हम सबको पता है, let's not deny that. इसके अराउंड कोई लॉ नहीं है. मैरिटल रेप अगर एक हस्बैंड करता है तो वो स्कॉट फ्री निकल जाता है लीगली, पीनल लॉज वाइज, राइट? ऑल्दो आप उसमें डोमेस्टिक वायलेंस में सेक्सुअल अब्यूज में जा सकते हो. सेक्सुअल अब्यूज तो है ना, राइट? ऑल्दो दैट इज द ग्राउंड फॉर डिवोर्स. क्रुएल्टी तो है ना, राइट? बट एटलीस्ट लेडी कैन से समथिंग. बट एक लिव इन रिलेशनशिप वाली वुमन की कोई नहीं सुनने वाला. इट विल बी लाइक you wanted it, right? So somewhere when in 2005 the Domestic Violence Act came into force, they even recognized that a woman in a live-in relationship can be abused as a partner. So every protection or remedy that was available, be it protection order, be it household order where you get a roof over your head, be it interim custody of the children from the relationship, be it monetary relief, which you call maintenance in normal language, right? All these were given to the live-in partner. So at least for the time being, she was protected like the wife. And secondly,
the children from those relationships were clothed with legitimacy. So if you are in a live-in relationship, your child will be a legitimate child. And father की property inherit करेगा, mother की तो anyway करता है, right? Father की property inherit करेगा. Although parental property में आज भी there are loopholes. So children were clothed with legitimacy, and the Supreme Court was very, very categorical about it, that you cannot call a child illegitimate just because the parents did not marry as per your customs, right? So, but what exactly is a live-in relationship? Can you and your boyfriend call each other live-in partners if you are living in two different houses? No. So you have to cohabit for a reasonably long time. Reasonable can vary, right? Second, you have to be adults, 18 plus. Again, ये अगर आप मैरिज से कंपेयर करोगे तो डिफरेंट है. मैरिज में लड़कियों की एज 18 है, लड़कों की 21 है. यहाँ पे दोनों की 18 है, ठीक है. तीसरा, आप एक साथ एक घर में रहोगे, शेयर्ड हाउस होल्ड. चौथा, you behave like husband and wife. You open accounts together, you pay rent, you live in the society as partners, right? Your intention is to let the society know that you're together. तो एक तो ये है. अच्छा हाँ, लिव इन रिलेशनशिप्स और मैरिज में एक और बहुत बड़ा डिफरेंस है. मैरिज इज रिकग्नाइज्ड ओनली बिटवीन अ मैन एंड अ वुमन. लिव इन रिलेशनशिप्स आर रिकग्नाइज्ड फॉर एनी जेंडर. So आज भी when our third gender are fighting for right to marriage, they at least, which is bare minimum, but they've at least got the right to live together. ठीक है. So if you are staying together for a considerably or a reasonably long time, you have the intention to let people or the society know that you're partners. You do things together, you have accounts together. तो आपने क्या किया? सिर्फ शादी ही तो नहीं की, बाकी तो आपने सब किया. तो इन दैट सिचुएशन योर चिल्ड्रन आर क्लोथ्ड विद लेजिटिमेसी, योर पार्टनर इज प्रोटेक्टेड, क्योंकि एक एटलीस्ट उनको एक टाइम के बाद झटका नहीं लगेगा कि ओ व्हाट हैपेंड, मेरी प्रोटेक्शन कहाँ है. वो अलग बात है, आज भी इंश्योरेंसेस कवर्ड नहीं करती, आज भी ऐसी बहुत चीजें हैं जो कवर्ड नहीं होती, बट एटलीस्ट लेजिटिमेसी होती है. ठीक है. देन आपका इसके बाद, अच्छा कुछ छोड़ रही हूँ क्या मैं जो आप लोगों को जिसके बारे में पता करना है? मेंटेनेंस वगैरह के बारे में काम करना है. यू वांट मी टू कवर मेंटेनेंस लाइकली टुडे? डिटेल में जाएंगे, डोंट वरी ऑन दैट. इन द डीवी वाला लेक्चर वील गो इनटू डिटेल विद मेंटेनेंस. अच्छा, माय पेस इज नॉट टू फास्ट फॉर पीपल हु आर नॉट फ्रॉम द लॉ बैकग्राउंड, आई होप. Yeah, anybody? Ma'am, I had heard a news meanwhile regarding like LIR, like living relationship. One news was there that is like if you are in a relationship for more than 2-3 years or like that period was given, okay, that lady would get a right of her right of his wife. So is it correct or is there anything different like that? She may get the right of property also. It was like that. I'm not sure, but please correct me if I had heard something wrong. Okay. So लिव इन रिलेशनशिप टेक्निकली वाइफ ऐसे नहीं बन जाती, उसके लिए आपको सेरेमनीज परफॉर्म करनी पड़ती है, राइट? व्हेन यू से, जब मैंने बोला ना रीजनेबली टाइम के लिए आप वाइफ की तरह ट्रीट करे जाते हो, जिसमें आप मेंटेनेंस के लिए हकदार हो जाते हो, जिसमें आपके बच्चे सारे राइट्स के लिए हकदार हो जाते हैं. सो यू कांट से कि शी बिकम्स अ वाइफ. उसके लिए तो शादी करनी पड़ेगी. 20-20 साल की लिव इन रिलेशनशिप्स के पास पीपल मैरी एंड दे मैरी फॉर दैट वेरी रीजन, बिकॉज जब उनको वाइफ का राइट चाहिए होता है. ठीक है. बिकॉज जो आपका से हिंदू सक्सेशन एक्ट है, अगर इफ योर लिव इन पार्टनर डाइज तो उसके बाद उसकी प्रॉपर्टी उसकी वाइफ, बच्चे और मदर की ही है. उसमें यस प्लीज मैम, जैसे आप बोल रहे हो कि 20-20 साल लिव इन रिलेशनशिप होता है, तो इट कैन बी एन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ऑल्सो ना. एक आदमी जो ऑलरेडी शादी किया हुआ है वो 20 साल लिव इन रिलेशनशिप में दूसरी के साथ भी रहता है, उसको भी बच्चे हैं, तो फिर कैसे वो करेंगे?
Okay. So live-in relationships have to be between A, two adults, B, consensual adults, C, people who are not already married. आप ऐसे आप चार नहीं कर सकते. Four marriages are not allowed in Hindus. In Muslims they are allowed, they are valid, they are legal. ठीक है, हिंदूज में नहीं है, क्रिश्चियन में नहीं है. इसमें भी अगर हम मेंटेनेंस की बात करते हैं तो हिंदू में सिर्फ फर्स्ट वाइफ इज एंटाइटल्ड टू मेंटेनेंस. मुस्लिम्स में सेकंड वाइफ भी एंटाइटल्ड है. व्हाई? बिकॉज शी इज अ वैलिड वाइफ. तो आप लिव इन रिलेशनशिप आप ये नहीं कह सकते मेरी मर्जी थी इसलिए आई वॉज लिविंग विद समबडी आउटसाइड अ मैरिज और मेरे वो बच्चों को भी लेजिटिमेट डिक्लेयर कर दो, उसको भी वाइफ बना दो. व्हाट हैपेंस टू द फर्स्ट वाइफ? सो दैट इज अगेंस्ट मोरालिटी. In India, we don't permit anything which is against public policy and morality. So we can't say immoral things क्योंकि मेरे fundamental rights है और मेरा मन कर रहा था इसलिए मैंने किया, right? So वो allowed नहीं है, right ma'am? Okay. So अच्छा ये वाला ना brief में discuss कर लेते हैं which is maintenance, because मुझे कहीं ना कहीं लगता है in India financial independence is a big problem, huge issue we have. Right? So, although despite being a lawyer who, takes up these cases, I would want कि one day मुझे maintenance cases ladies के लेने ही ना पड़े. Honestly, I'll be the happiest when every woman comes to me. And because there have been. So, I saw a smile on Harkirat's face. So, there have been matters where women have come up to me and I've asked कि खर्चा चाहिए? And they said, no, I'm financially independent. I just want this man out of my life now because he's toxic to me. And I don't want these cases, these long maintenance cases to drag me down. So just get me a divorce and I'm done with. So I have encountered such women. And I have seen women also, they are very well settled, but they haven't saved a single penny for themselves. कमाती हैं, equal to the husband कमाती हैं, but at the end वो कहाँ चला जाता है family के expense में, उसको नहीं पता है, because she is not taking care of the expenses. And the problem becomes कि जब मैंने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था ना इनकम एफिडेविट, इनकम और असेट्स की एक एफिडेविट भरवाई जाती है, उसमें हस्बैंड क्या कहता है, शी इज अर्निंग इक्वल टू मी. ये कहीं नहीं बताता कि वो इतने साल का जो मैंने जोड़ा इसकी इनकम का भी वो कहाँ गया. सो बट स्टिल, सो अगर आपको स्टिल मेंटेनेंस में जाना है, सो देयर आर अ प्लेथोरा और देयर आर various laws that cover that. One would be the Domestic Violence Act. If you are a woman who's a female relative, be it daughter, sister, mother, wife, girlfriend, live-in partner, whoever, अगर आप एक रिलेशनशिप में हैं एंड आपके साथ वायलेंस हुआ है तो आप मेंटेनेंस के लिए डाल सकते हो अंडर द डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट. बिकॉज व्हाई इज इट सो? व्हाई दिस लॉ वाज मेड इज, एक किसी को अगर टॉक्सिक रिलेशनशिप से एग्जिट देनी है तो उससे क्या क्या चाहिए? सबसे पहले तो प्रोटेक्शन चाहिए कि ये जो हुआ है वो अब ना हो, पोस्ट दिस डेट ये ना हो. ठीक है. सेकंड उसे हाउस होल्ड चाहिए, रूफ ओवर द हेड, वरना जाएगी कहाँ? वरना तो जिंदगी भर उसी रिलेशनशिप में रहेगी. थर्ड उसे चाहिए अगर उस रिलेशनशिप में कोई बच्चे हैं तो अगर हस्बैंड ने रख लिए या लिव इन पार्टनर ने रख लिए तो शी नेवर एग्जिट. चौथा वो शी नीड्स कि एटलीस्ट खर्चा पानी तो चलता रहे, फूड, basic. And maintenance is not about my basic necessities. It's about reasonably जैसे मैं रह रही थी post exiting. ठीक है, वैसा मुझे चाहिए. तो आप ये नहीं कह सकते कि ये एसी का खर्चा क्यों मांग रही है. अरे अगर तुम्हारे घर में था तो मांगेगी, राइट? इसको तो दाल रोटी से ऊपर सोचना ही नहीं चाहिए. ऐसा नहीं होता है. ठीक है. तो सबसे पहले डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में एनी फीमेल रिलेटिव हु हैज अंडरगोन वायलेंस in the relationship can ask for that from the perpetrator. Second, if you're a Hindu, इसमें two-way game है. Hindus में maintenance husband भी मांग सकता है, wife भी मांग सकती है. Although you see very, I think बहुत ही minimum cases जहाँ husband मांगता है और उसे मिलती है. Because India में males are better equipped. They normally A, don't need it, B, they have a huge ego to ask for it. Even as lawyers, we'll have to convince that person कि नहीं बोलो कि चाहिए, right?
there have been times where I've thoda off topic. There have been times I told a guy, he explained me, how the wife was abusing, and I said कि cruelty में divorce डाल देते. He said, who will believe कि मैं पिट रहा था? और कहते मैं पिट थोड़ी रहा था. मैंने कहा, do you really feel कि जब तक तुम पिटोगे नहीं तब तक cruelty नहीं है? So same happens with wives also, right? तो मेल्स का क्या है, उनका ईगो बहुत बड़ा है कि सोसाइटी को मैं क्या बोलूं, मेरे पे क्रुएल्टी हुई, ठीक है. बट स्टिल हिंदूज में मेल फीमेल हस्बैंड वाइफ दोनों क्लेम कर सकते हैं, और तो करती वाइफ भी है, ठीक है. इसमें भी अगर आपका, इसमें आप मेंटेनेंस दो तरह से ले सकते हो. इफ यू हैव अ डिवोर्स केस पेंडिंग, देन यू अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट यू कैन क्लेम अलोंग विद द डिवोर्स मैटर योर मेंटेनेंस. अगर आपका कोई केस नहीं है, यू आर लिविंग सेपरेटली बट यू नॉट फाइंड अ केस, देन फॉर हिंदूज देयर इज अ हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट, ठीक है. यू कैन डू अंडर दैट एंड यू कैन आस्क फॉर इट, ठीक है. नाउ अब आ जाता है, बट ये तो हिंदूज के लिए हो गया. व्हाट इफ अ मुस्लिम वुमन वांट्स इट, व्हाट इफ अ क्रिश्चियन वुमन वांट्स इट, व्हाट इफ अ लिविंग पार्टनर वांट्स इट, ठीक है. व्हाट इफ अ सन वांट्स इट, व्हाट इफ अ डॉटर वांट्स इट. So there is a section in CRPC which is section 125. A, it is secular. So if you are a Hindu, if you are a Muslim, if you belong to any religion, अगर आपको maintenance चाहिए, you go under that provision. You go to the magistrate under section 125 CRPC. Secondly, अगर आप एक live-in partner हो, आप covered हो under this act. अगर आप एक second wife हो तो Muslim हो, क्योंकि आप वाइफ तो लीगल हो ना, यू आर लेजिटिमेट वाइफ, आप कवर्ड हो. अगर आप एक सन या डॉटर हो माइनर्स, तो यू कैन गो एंड क्लेम इट फ्रॉम योर फादर. अच्छा, अगर आप पेरेंट्स हो, व्हाट अबाउट सीनियर सिटीजन्स, व्हाट अबाउट पेरेंट्स हु आर नो मोर एबल टू टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स, दे कैन क्लेम अंडर दिस सेक्शन. इस पे भी एक डिबेट था. अर्लियर ये माना जाता था कि only a man will provide maintenance to others. तो इस पे क्वेश्चन उठा कि what if I only have daughters? What if I want to claim maintenance from my daughter? So now you can claim as parents both from your son and your daughter maintenance under section 125. ठीक है. So maintenance के ये कुछ major provisions है. अब बाकी when you go under Muslim personal laws, तो वहां वो लोग मेहर का एक कॉन्सेप्ट है, बट देन वो मेंटेनेंस का कॉन्सेप्ट नहीं है. दैट इज अ वन टाइम सेटलमेंट, जैसे हमारे में एलिमनी कहते हैं ना मेजर लॉज में. सो मेहर इज काइंड ऑफ कि एक वन टाइम है, ठीक है. तो उसमें नहीं जा रहे हैं हम, बिकॉज आई कैन सी ऑडियंस मेजरली इसमें नहीं है. अच्छा, अब वो क्वेश्चन कवर कर ले जो एक मुझे बीच में क्वेश्चन लिखा था अबाउट साइबर, आई सो, ठीक है. तो एक चीज मुझसे मिस हो गई. अच्छा, हर चीज हो जाए, ग्रेट. सो उसमें मुझसे एक चीज मिस हो गई व्हेन वी वर टॉकिंग ऑफ पॉश और सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस. आजकल ऑल ऑफ अस आर वर्किंग फ्रॉम होम. फॉर एग्जाम्पल, वी आर कंडक्टिंग दिस सेमिनार. इफ आई और यू फेस सम क्वेश्चनेबल थिंग, आर वी कवर्ड? Is this not my workplace today? Are you not visiting it virtually? So if anything happens, either way, we are covered under the act. ठीक है. And अच्छा, harassment का भी सोचा है होता क्या है? What is harassment? Is harassment only physical, say touching or no? इसमें बहुत कुछ है, asking for favors, showing लीगल टर्म्स की बात करूं तो आस्किंग फॉर फेवर्स, शोइंग सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क्स, राइट, ठीक है, भूल जाओ, फॉरगेट इट, वो सब बुक्स में है. आपने कोई एडवांस किया, मुझे अच्छा लगा, आई एम ओके विद इट, कोई हैरेसमेंट नहीं है. आपने कुछ किया, मुझे अच्छा नहीं लगा, आपने फिर भी किया, सिंपल हैरेसमेंट है. सो फॉरगेट इट कि मैं टेक्सचुअली क्या कह रही हूँ. इट इज एज सिंपल एज दैट. A lot of people, say, मैम मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया था. Women just keep on, saying whatever they want to. No, boss. She told you she's not comfortable. You didn't pay heed to it. It constitutes harassment. अब वो कंधे पे हाथ रखने से भी ओके हो सकती है और वो सिर्फ घूर के देखने से भी ओके नहीं हो सकती. So either way, that is harassment.
इससे इजी डेफिनेशन मुझे नहीं लगता हो सकती है, और उससे ज्यादा डिफिकल्ट में एटलीस्ट नॉन लॉयर्स को तो घुसने की नीड भी नहीं है. हर कीरत हैज टू रिमेम्बर इट, बाय हार्ट इट, मग इट अप, इवन आई डिड सो. ठीक है, बट फॉरगेट, आप लोगों को नहीं जानना है. A reverse case can be a reverse case because we have seen the movie Aitraz. So is it really so? हाँ, यस, लेकिन जो आपका पॉश एक्ट है वो सिर्फ विमेन को प्रोटेक्ट करता है, लेकिन आपकी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जब वो अपनी पॉश पॉलिसीज बनाती हैं तो उनका मर्जी है वो अपने किस किस एम्प्लॉय को कवर करना चाहती हैं. दे हैव द डिस्क्रिशन. पॉश पॉलिसी आप न्यूट्रल बना सकते हो एज एन ऑर्गेनाइजेशन. यस सोनिया. मैम एक्चुअली पॉश का जो हम पढ़ते हैं वो तो प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट अगेंस्ट वुमेन ही कवर होता है, पर क्या ऑर्गेनाइजेशंस और कंपनीज इस तरह के क्लॉज डाल सकते हैं मेल मेंबर्स? एब्सोल्युटली डाल सकते हैं, एब्सोल्युटली डाल सकते हैं. पॉश पॉलिसीज में वो अपनी ट्वीकिंग्स कर सकते हैं, लेकिन आप में से कोई भी अगर किसी मल्टीनेशनल या कहीं हो तो एक चीज याद रखना, कोई भी कॉर्पोरेट ऐसी कोई भी चीज नहीं करेगा जो मैंडेटरी नहीं है, क्योंकि कंप्लायंस मीन्स मनी. क्या आप कर सकते हैं? जी आप बिल्कुल कर सकते हैं, बट मैंडेटरी सिर्फ वुमेन के लिए बनाना है पॉलिसी. हाँ, क्योंकि आईसीसी उसको देखेगी नहीं, एलसीसी उसको देखेगी नहीं, कंप्लेन वहां तो डाल नहीं सकते हम. करेक्ट, लेकिन आईसीसी, जब आपकी आईसीसी होगी, अगर आपकी कंपनी की पॉलिसी मेल्स को भी प्रोटेक्ट कर रही है जी, तो देन दे कैन टेक वर्क अराउंड इट. पर वो इंटरनल कंप्लायंस है, क्योंकि आईसीसी एक इंटरनल कंप्लायंस है, वो आपकी कंपनी का इंटरनल है ना. एट दी एंड अगर आपको पुलिस के पास लेके जाना है ऑपरेटिंग मॉडेस्टी में, तो उसमें आप मेल को नहीं लेके जा सकते, क्योंकि वो क्रिमिनल सेक्शन ही मेल्स पे अप्लाई नहीं करता. राइट, लेकिन वो आपकी कंपनी पॉलिसी के ऊपर है. बट एज अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस विच आई हैव सीन, जो चीज आप मैंडेटरी नहीं बनाओगे कंपनी उसे कभी फॉलो नहीं करेंगी. सीएसआर तक तो हमें मैंडेटरी बनाना पड़ा है कि थोड़ा सा देना पड़ेगा, उसमें भी आधे ज्यादा टाइम अपने ही एरिया के आसपास पेड़ लग रहे होते हैं, अपनी इंप्लॉयज की किसी चीज में काम हो रहा होता है. राइट, सो दैट इज अ कंप्लायंस इशू. ठीक है. अच्छा, एक क्वेश्चन आई गेट लाइक ऑलमोस्ट एवरी डे, ठीक है, आज भी आया, एंड दैट इज, डज इट नॉट हैपन टू द ऑपोजिट जेंडर? ठीक है, होता क्या है, whenever a law is made, why is it made? Society is going a certain way. ठीक है, उसमें एक majoritarian चीज को होती है ना. There is a certain way a society is going. There is a mischief, जो हम legally कहते हैं. So you remedy the mischief, right? There is a problem, you remedy the problem. Now, क्या कुछ false cases होते हैं? हाँ, बिल्कुल होते हैं. बट क्या उसके लिए लॉ बदलना चाहिए? एटलीस्ट प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जो मेरा है, नहीं. अभी हम उस सिचुएशन में नहीं है जहां लॉ बदलने की नीड है. आई टेल यू व्हाई. डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट से शुरू करते हैं. डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट आपको क्या दे रहा है? आपको प्रोटेक्शन दे रहा है, आपको रूफ ओवर योर हेड दे रहा है, आपको मेंटेनेंस दे रहा है, और आपको चिल्ड्रन की इंटरिम कस्टडी दे रहा है. नाउ which man shifts to another person's house after marriage? So which man neither has the maika or the sasural to go to in case something unforeseen happens? Because we know in Indian society, maika भी वापस नहीं लेगा. ठीक है, your parents will also not take you back in a lot of cases. ठीक है, so men don't need the residence order in 99.999% matters. Second right, maintenance. Which man after marriage stops making money even despite being equally or more qualified? No one. ठीक है. Thirdly, आपका जो प्रोटेक्शन ऑर्डर है, जेनेटिकली men are more strong. एक आदमी एक थप्पड़ मारता है, वो लेडी की 10 लातों से बड़ी है, एंड इट्स अ फैक्ट. ठीक है. एंड चौथा, इवन सोशली men are stronger. जब एक डोमेस्टिक वायलेंस का केस होता है तो लेडीज के पास प्रूफ पता है क्यों नहीं होता? क्योंकि रिलेटिव्स तो सारे उस आदमी के हैं ना जो घर में रह रहे हैं. आपका कोई रिलेटिव वहां नहीं है आपको बचाने के लिए. सो शुड डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट बी जेंडर न्यूट्रल? सॉरी, बट इन दिस सोसाइटी वी कैन नॉट मेक इट जेंडर न्यूट्रल. इट विल बी, आई वुड से, मिसयूज टू अनदर लेवल. I'll give you an example. There's an act called Protection of Senior Citizens Act. ठीक है, 2007 में ये
आया था 2005 में, आपका डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट आया था, एंड देन सीनियर सिटीजन एक्ट आया था आपका। उसमें क्या था कि पेरेंट्स और सीनियर सिटीजन, अगर बच्चों ने, उन्होंने समझ लो बच्चों को गिफ्ट कर दी कोई प्रॉपर्टी, या बच्चे उन्हीं के घर में उनके साथ रह रहे हैं और बच्चे उन्हें तंग कर रहे हैं, तो दीज पीपल हैव द राइट टू गो टू नॉट द कोर्ट बट द एसडीएम फॉर अ स्पीडी रेमेडी. So while a woman will go to a normal court, magisterial court, which will take, months and months and months to manage, this person will go to an SDM within weeks. After every week, there'll be a date and there'll be speedy remedy. So within 3 months, the case is over. जब तक लेडी केस डालेगी डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में और उसको बेसिक, दूसरी पार्टीज को नोटिस मिलेगा और वो कोर्ट में आएगी, तब तक तो सास ससुर सीनियर सिटीजन एक्ट के अंदर जाके एसडीएम से स्पीडी ऑर्डर ले चुके हैं, लेडी घर से बाहर है, क्योंकि सीधा पुलिस जाती है वहां से इलेक्शन कराने. ठीक है, तो हुआ क्या कि ये वाला लॉ सास ससुर ने यूज करना शुरू किया. ठीक है, लॉयर्स ने बहुत हेल्प करी है, सो आई एम नॉट अशेम्ड टू से इट, रादर आई कांट से व्हाट. ठीक है, तो होता क्या है, एक ही लॉ फर्म से 2 अलग लॉयर्स हायर होते हैं. एक बेटे को रिप्रेजेंट करता है, एक माँ बाप को रिप्रेजेंट करता है. सबसे पहले पेपर में निकलवाया जाता है हमने अपने बेटा बहू को डिसोन कर दिया बिकॉज दीज पीपल वर ट्रबलिंग अस. तो बेटे के साथ बहू को डिसोन किया जाता है. उसके बाद सीनियर सिटीजन एक्ट में एसडीएम के अंदर जाया जाता है. विद इन 3 to 4 months बहू इज आउट ऑफ द हाउस, द बेटा इज स्टिल लिविंग देयर. majority of the time disowned बेटा वही रह रहा है. ठीक है, so this act was misused to another level, क्योंकि बहू को बाहर तो निकालना है, कैसे निकालेंगे. Then it took Supreme Court some time to come up with कि भाई तुम ये बात, क्योंकि होता क्या है, स्पेशल लेजिस्लेशन जो होते हैं ना, द लैटर वन जो बाद में आया है, दैट प्रिवेल्स ओवर द फॉर्मर वन इन केस ऑफ एनी इनकंसिस्टेंसी. ठीक है, अब ये आया बाद में, ये आया 2007 में, डीवी आया 2005 में, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट. तो अब लोगों ने इनिशियली कहा कि नहीं नहीं नहीं, ये स्पेशल लेजिस्लेशन है, बाद में आया, पेरेंट्स की प्रोटेक्शन ज्यादा बढ़ी है. सुप्रीम कोर्ट सेड नो वेट, तुम एक फास्ट ट्रैक प्रोसीजर लगा के एसडीएम के यहाँ तुम फास्ट ट्रैक प्रोसीजर लगा के लड़की को क्या घर से बाहर फेंक दोगे, उसको उसकी रेमेडी तो लेने दो, उसको उसका जो रेजिडेंस ऑर्डर है उसकी रेमेडी तो लेने दो. सो दिस सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन कि अगर वुमन तब तक डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में प्रोटेक्शन मांगने नहीं दी गई है, तब भी आप लेडी को, सिर्फ औरत को अकेले घर से बाहर नहीं निकाल सकते. बेटा बहू दोनों को निकालना है, वो बात अलग हो रही है. वी आर टॉकिंग ओनली वुमन. ठीक है, क्योंकि जाएगी कहाँ, प्रोटेक्शन इशू कहाँ, कौन लड़की को देखेगा छत पे, छत कहां से आएगी. सो दैट हैपेंड. सो दिस लॉ जहां जेंडर न्यूट्रल हुआ वहां प्रॉब्लम आई. रिसेंटली आई वॉज फाइटिंग अगेंस्ट अ फादर हु ट्राई टू थ्रो हिज ओन डॉटर आउट, क्योंकि उनको सारी प्रॉपर्टी बेटे को देनी थी और डॉटर का डिवोर्स हो रहा था, तो शी नीडेड सम प्रोटेक्शन. उन्होंने घर में नहीं रखनी थी बेटी, बेटी ने कहा यार तुम्हारी तो घर रहूंगी, आई एम योर डॉटर. सो वी फॉट अगेंस्ट द फादर एंड वी यूज दिस जजमेंट. ठीक है, सो दिस हैपेंस. तो ये जेंडर न्यूट्रल करते ही इशू आया विच वॉज एड्रेस्ड. देन एक सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं एक लॉ का, डाउरी. कितने मेल्स को डाउरी देनी पड़ती है शादी के लिए इंडिया में, देनी नहीं पड़ती ना. तो कैसे कह सकते हैं हम कि इसको जेंडर न्यूट्रल करो यार. कौन दे रहा है डाउरी शादी करने के लिए. आज हकीकत जज बन जाएगी, शायद फिर भी देनी पड़ेगी. अगर ये मेल होती तो 1 करोड़ आना था अंदर शादी करते ही, राइट, पक्का आना था. 1 करोड़ की तो पिकती फिर. ठीक है, सो डाउरी कैसे आप जेंडर न्यूट्रल कर दोगे. लेकिन आप करते हैं ऐसे एक्ट की बात जो जेंडर न्यूट्रल है. पॉक्सो, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट, इट इज अ जेंडर न्यूट्रल एक्ट. If a child is sexually harassed or assaulted, in that case the child can be of any gender, male, female, transgender, any other gender. उसमें जेंडर मेंशन नहीं है उस एक्ट में, और परपेट्रेटर का भी जेंडर मेंशन नहीं है. सो एन अग्रेसर और परपेट्रेटर कैन आल्सो बी अ मैन, वुमन, ट्रांसजेंडर. अभी रिसेंटली एक ट्रांसजेंडर बहुत बुक अंडर पॉक्सो, तो वहां भी जेंडर मेंशन नहीं है. Why? Because children, irrespective of gender, are vulnerable,
Rather than the survey a few years back जिसमें ये आया था कि under POCSO 49% female child and 51% male child are victims. रीजन, अच्छा इसका रीजन भी सोसाइटी में अगर आप ध्यान से सोचो, इफ यू एक्चुअली लुक क्लोजली, इसका रीजन भी सोसाइटी में है. व्हेन वी हैव अ डॉटर वी टेक वेरी गुड केयर ऑफ द चाइल्ड. हम बच्चे को अकेला कहीं नहीं भेजते, बट व्हेन वी आर सन वी जस्ट लीव देम ओपन कि जाओ भाई खेलो. अब वो किसी और को अब्यूज करें या खुद अब्यूज होके आए, वी एज अ सोसाइटी डोंट केयर, डोंट बॉदर. तो फिर वो विक्टिम्स भी तो बन सकते हैं ना. है तो बच्चे, उनमें वो फिजिकल, डिस्पाइट बीइंग मेल चिल्ड्रन, उनमें वो हार्मोन, वो टेस्टोस्टेरोन नहीं है, वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वो अपने अब्यूजर्स को वो कर सके, मार सके. राइट. सेकेंडली, हम मेल चिल्ड्रन को बोलने भी नहीं देते. वी विल नॉट एज पेरेंट्स से कि आवर चाइल्ड वॉज अब्यूज्ड, आवर मेल चाइल्ड वॉज अब्यूज्ड, क्योंकि मेल ईगो आती है. So that is why they are vulnerable and that is why this law is gender neutral. So जहां नीड है वहां जेंडर न्यूट्रल है. मैं ये नहीं कह रही हूँ, I'll be very honest, I'm not saying कि अब्यूज नहीं है, बट अब्यूज क्या मर्डर लॉज का नहीं है. अब्यूज तो किसी भी चीज का है ना, एनी लॉ इज अब्यूज. बट कैन वी से कि मर्डर्स के लॉज को भी आप खत्म कर दो. अभी there's a dispute around marital rape should be criminalized or they should not be criminalized. And the biggest reason people are saying is कि वो misuse होंगे. But are we taking into consideration of the fact that just because it is legal, men are coming out in the open? There is a, I think Scoop Group as a channel. I don't know if you people watched it. The host Samdesh had, gone around the parks in Delhi and talked to men in Delhi about marital rape, and the answers they gave, that was another level of, I don't know what should I say, ownership over the wife. Because they said what she'll not give me, then I'll abuse. And they used terms and terminologies which were, if somebody else would have come on camera and said it, they would have been booked. But just because they are husbands, that offense is not a crime. तो पीपल से वो अब्यूज होगा, बट क्या उस वजह से उसको लॉ नहीं बनना चाहिए? सो डज दिस लॉ नीड एवोल्यूशन? यस, इट शुड. इट श्योरली नीड्स एवोल्यूशन. और ये जेंडर न्यूट्रल नहीं बन सकता, क्योंकि अगर मेल ने लगाने शुरू कर दिए फीमेल्स, वो बेचारी प्रूव भी नहीं कर पाएंगी. पूरी फैमिली के साथ रहती है, वो आके कहेगी बिल्कुल किया था, ये तो हमारे बेटे को रोज मारती है. राइट. So that is, as per the current society we are living in, we can't afford gender neutral laws, and that is why the constitution makers only made provisions for women and children where beneficial legislations could be made. They could have said men के लिए भी बना दो. They did not, despite the majority being men themselves, despite our legislative assemblies and our parliament being majority men, we still, हमारी 1/3 की आज तक तो women घर नहीं पाई, leave alone 51%, despite being a 50% population. ठीक है. So I personally feel you people have the right to differ, and that is कि थोड़ा बहुत अगर कोई law misuse हो रहा है, that does not mean the law should be changed. अच्छा, misuse हम lawyers भी करवा रहे हैं. मैं हमेशा कहती हूँ जो विक्टिम आके बोले वो लिखो ना. कैन वी नॉट ड्राफ्ट, अगर आपने मुझे आके बोला है कि आई फेस अब्यूज, तो क्या मैं उसको ऐसे नहीं लिख सकती कि लॉ भी कवर हो जाए? कैन आई नॉट ड्राफ्ट इट डिफरेंटली? शुड आई नीड टू ऐड दोस कॉपी बुक स्टाइल की जज को देख के पता चल जाए ये तो हर मैं कॉपी पेस्ट पढ़ रहा हूँ? अरे क्लाइंट के साथ बैठो, उससे लिखवा लो. होता क्या है जब आप लिखते हो अपनी मर्जी से, क्लाइंट की स्टेटमेंट होती है, क्लाइंट जाके अब वो बेचारी तो क्या बोलेगी? वो क्लैश होता है, आपका इनकंसिस्टेंसी आती है, और लोग क्या बोलना शुरू कर देते हैं. आई एम सीइंग अ वेरी प्रॉब्लमैटिक ट्रेंड इवन ऑन द इंटरनेट वेयर लॉयर्स आर मेकिंग इट एज इफ दीज लॉज आर ओनली अगेंस्ट मेन. एंड सिंपल रीजन फॉर दैट ऑनेस्टली इज कि क्लाइंट पैसा मेल ज्यादा देता है. फीमेल डोंट हैव द मनी टू पे इन अ लॉट ऑफ सिचुएशन. तो इट्स इजियर टू से ना, अरे तुम्हारे अगेंस्ट लॉ मिसयूज हो रहा है तो मैं आऊंगी आपके पास कि भाई हाँ मुझे बताओ मैं कैसे बचूं. I'm telling you the truth. So that is the situation. I think I've exceeded time. So I'm open to questions now.
No, the session is so interesting. We can go on and on. So we can go on with your questions now. I'll call them out one by one, and then you can address their doubts. So, sure. So, Miss Nayak, please unmute yourself. Yes, ma'am. Ma'am, actually, I want to talk about fast track courts and what are the cases which can be filed in fast track courts. Why? What exactly? मतलब फास्ट ट्रैक कोर्ट्स मेरे हिसाब से तो एक मिथ ही है. इंडिया में फास्ट ट्रैक कुछ नहीं है. एंड जैसे मैंने आपको कहा, देयर आर सम लॉज दैट स्ट्रेट अवे गो टू द एसडीएम. ठीक है. जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया सीनियर सिटीजन एक्ट का. ठीक है. दूसरा, जब आपके फीमेल रिलेटेड लॉ नहीं है, लेकिन आपका जो सरफेसी है, जो आपका कोविड में आपने बहुत लोगों का सुना होगा, वो होम ईएमआई नहीं दे पाए, तो उनके केसेस बैंक कहता है मैं तो सीधा डीएम के पास ले जाऊंगा. दोज आर सम सो कॉल्ड फास्ट ट्रैक कोर्ट्स. लेकिन उसमें वो धमकी ज्यादा बन गई है. बिकॉज आई हैव appeared in these SDM courts. Look, they are not judiciary. They are the executive who are acting as judiciary. So ना वो एविडेंस ठीक से फॉलो होता, ना वहां के लोकल लॉयर्स कुछ आके दे जस्ट वांट टू शाउट एंड से कि भाई ये तो बेटी है ऐसा कर रही है, बहू है ऐसा कर रही है, हम बूढ़े माँ बाप. एंड द एसडीएम इज लाइक हाँ मुझे तो ऊपर से ऑर्डर आया हुआ है कि मुझे सीनियर सिटीजन के फेवर में ही देना है. प्रैक्टिकल बात बता रही हूँ, डोंट कोट इट मच. ठीक है. लेकिन वो होता है. दे आर नॉट जजेस. जुडिशरी में ऐसे ही नहीं आपकी ट्रेनिंग होती है. Even after being trained in the judicial academy, you go again and again for trainings, right? So वो fast track court doesn't work. यही अगर आप वो फेवर में, मुझे हमें पता होता है exactly कि किस फेवर में जाने वाला है, because वो एक ट्रेंड है उस जगह का. वेरी वेरी सुप्रीम कोर्ट जजमेंट दिखा दो तब भी कभी कभी फेवरेबल नहीं होता. ठीक है. ठीक है. So but maybe in the future. Yes, ma'am. Thank you. Okay. Miss Anybody else? Miss Vashvi Singh. Namaste. Good evening, ma'am. So, ma'am, Good my evening. question is related to live-in relationship. Suppose there is a man who already has a legitimate wife and 2, 3 children, and he gets into a live-in relationship with another woman, and children are born from that relationship. So, can that those children, can they claim any like property from the fathers? So, but that's not the child's fault, right? Then we are as society and as law actually calling them illegitimate. हाँ, आजकल we don't call illegitimate, but हाँ, inheritance flows from a valid relationship and नहीं मिलती. मतलब अगर फैक्ट्स टू फैक्ट्स पे अगर हम बात करेंगे, अगर हम बिल्कुल ही किसी डिटेल, शायद हम रिसर्च करके कुछ निकाल भी लेंगे. A lot of times आप मुझसे एक जनरल क्वेश्चन पूछोगे तो उसका आंसर नो होगा, बट जब हम फैक्ट्स पे बात करेंगे, इफ इट्स अ रियल केस, ठीक है, अगर हम फैक्ट्स पे बात करेंगे, शायद हम कोई प्रेसिडेंट निकाल के उस केस को एक अच्छा प्रेजेंट कर पाएंगे. बट जनरली हम कहते हैं कि जब आपकी एक वैलिड एक वाइफ है तो आप दूसरे के साथ एक रिलेशनशिप में, क्या शादी भी करोगे तो भी नहीं. जब शादी वैलिड नहीं होगी तो लिव इन वैलिड कैसे हो सकता है? वर्क्स लाइक दैट. ठीक है. Madam, namaste. नमस्ते. This is Professor Rini from Karnataka. I just want to clarify. Namaste, ma'am. I just want to clarify that, ma'am. 2 times I've cleared my mains in civil judge exam. Due to some reasons, I have not cleared the interview. Yes, ma'am. I just want to clarify that. What is the difference between a complaint and police report? Why? Because in CRPC section 2 clause D, complaint means orally or writing which has been given to a magistrate and all. When we see section 2 clause R, police report 173 clause 2, it is a slight difference. So when a person is going to give a क्लास बनती जा रही है. नहीं मैं कह रही हूँ लेट्स ट्राई टू स्टिक टू, बिकॉज यहाँ कुछ लोग ना मैम नॉन लॉयर्स भी हैं, एंड तो लेट्स स्टिक टू द टॉपिक एज मच एज पॉसिबल. You just explain about it, ma'am. So I just want to clarify that. That's it, ma'am. Nothing more than that. You said that when a people is going to complaint or when the police officer they are going to take, whether it is considered as a police report or as a complaint, ma'am. From complaint, a private complaint will also be there. Acha, Harkiyat wants to answer. Okay, Ma'am,
I interactive रखते हैं मैम. I'll cover. Don't worry. Okay, fine. Okay, let's. I like sorry interactive. to interrupt like this. Please. मुझे time हो गया है. पढ़े हुए आप Yes. करते. चलो. Yes. So one thing is police report, and the other you are asking is a complaint, right? Yes. Yes. So a police report is something which is filed after the investigation is complete through an FIR. आपने FIR फाइल की या फिर कोई कंप्लेंट फाइल हुई थी अंडर सेक्शन 2D, तो उसमें जब एक तो FIR जिसमें पुलिस खुद इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देगी, और एक है कंप्लेंट जो मजिस्ट्रेट के पास हम डायरेक्ट फाइल करते हैं अंडर सेक्शन 200, 201, 202 अगर हम रीड करते हैं, तो उसमें अगर उन्होंने इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर कर दी अंडर 156 सब सेक्शन 3, तो वहां पे जो इन्वेस्टिगेशन की लास्ट जो रिपोर्ट पुलिस ऑफिसर फाइल करते हैं उसको हम पुलिस रिपोर्ट या जो चालान पेश होता है या क्लोजर रिपोर्ट जिसको बोलते हैं, दैट इज द नेम दैट इज गिवन टू इट. एंड Charge और final report दोनों will be. यस, वो पुलिस One रिपोर्ट and the same. एंड द कंप्लेंट One and the इज same. यस. मैम charge sheet में हाँ sorry. हाँ, please. Please continue. Please continue. Yes. And The the final one report and the that police is report is one and the same, right? Yes. That is the same thing. Yeah. But complaint Yeah, and fine. police report are not the same thing. हाँ correct. Yes. Complaint will be हम private complaint लेके जाते हैं ना बहुत बार. Like Yes, she ma'am. said in the 200 आप Yes, प्राइवेट ma'am. कंप्लेंट डालते हैं. कभी हम ऑल्टरनेटिव प्रेयर्स भी डालते हैं. कभी हम पुलिस मजिस्ट्रेट को कहते हैं कि पुलिस के पास हम FIR लिखवाने गए थे, उन्होंने नहीं लिखी, तो आप Yes. 156(3) में डाल दीजिए. अच्छा, दिल्ली में ना हम इसको ऑल्टरनेटिव प्रेयर लेके चलते हैं कि या तो 156(3) में आप इसको इन्वेस्टिगेशन के लिए डाल दो या 200 में आप इसे प्राइवेट कंप्लेंट लेके चल लो, अगर हमें लगता है कि हमारे पास बेसिक एविडेंसेस है. Yes. तो हम ये ऑल्टरनेटिव प्रेयर भी डालते हैं. सो 200 बिकम्स अ प्राइवेट कंप्लेंट एंड 156(3) से हम इन्वेस्टिगेशन के लिए रिक्वेस्ट करते हैं. Yes. इसमें भी अब पुलिस क्या, व्हेन द पुलिस इन्वेस्टिगेट्स, उसके बाद पुलिस का ऑप्शन है एक्चुअली सेट, जिसे चालान केस कहते हैं, जो पुलिस से आता है, राइट? Yes, ma'am. आपकी चार्जशीट भी हो सकती है और आपकी फाइनल रिपोर्ट भी हो सकती है. Yes, ma'am. वेयर द पुलिस सेज कि नहीं कुछ नहीं निकला, हमने चेक किया था. कहीं ना कहीं एवरीथिंग कम्स अंडर द फाइनल रिपोर्ट पार्ट. Yes, ma'am. बाकी इफ यू वांट टू गो इनटू डिटेल तो आप मेरा नंबर ले सकते हो, हम बात कर सकते हैं. एज लॉयर्स आई वुड लाइक टू कनेक्ट विद यू. ठीक है? Sorry, ma'am. नहीं I प्लीज. wanted to clarify that. ग्रेट. मैं बस ये एक्चुअली क्या है कि यहाँ मैं इतना डिटेल टेक्निकलिटीज में मैं खुद नहीं गई आज, बिकॉज मैंने रियलाइज किया कि यहाँ बहुत सारे नॉन लॉ स्टूडेंट्स हैं. Yes. बाकी एज लॉयर्स आई वुड लव टू कनेक्ट विद यू. Yeah, sure, ma'am. Definitely. ग्रेट. Thank you. थैंक यू हरकिरत. I'm actually, Welcome, ma'am. she wanted to ask something, so please go ahead. Who wanted to ask? Harkirat. Yes, please. Ma'am, I have a question. So, ma'am, I am in collaboration with a person. He's an individual, and what he does is he has an Instagram page. So he takes up cybercrime cases, not particularly cases. He's not a lawyer. So what he does is he helps people either through a legal aid that he can provide or by removing the videos from the porn sites and everything. So he helps either girls or boys or even transgender community people also. So I am a part of that legal aid panel. So I do not have much experience, but as much as I know the law and as much as I've interned, I help them. So the one thing that I always encounter is that there is a girl and she was in a relationship with a guy. So they are not adults. That happens mostly. And there are pictures of that girl with that guy. Now he is harassing her. The girl does not want to tell the parents. She does not want to approach the police directly. Now, what is a better way, one, to counsel her? And second, is there anything like either I suggest go for a cyber complaint online so you do not have to go to the police station directly. But still, because they are not major, so an intervention by the parents is going to be required. And in such kind of sensitive cases, that is going to happen. So is there any platform or any kind of another website, government website, which you can suggest? I think every police station